seen so many people who go for meal replacers, who go for fat burners, which actually is a marketing gimmick, which is like you take this pill and you will reduce weight. ये पिल खाने के पहले ले लो, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका वजन भी कम हो जाएगा. And out of desperacy or whatever you call it, people go ahead and buy such products. Like meal replacers bhi hai ki you skip your lunch and you just have this powder and water or milk, and that should be enough for your protein and caloric requirement. You don't have to eat your khana. सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, शी इज अ सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। साथ ही साथ ये फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं एंड शी ऑल्सो ओन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच गोज बाय द नेम ऑफ हेल्थ फ्यूल। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट श्रेया मैम। Thank you so much. Thank you for having me here. It's been great, and I think we are going to have a conversation on health and diet and nutrition, exercise and sleep. So yes. डेफिनेटली। आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड में काम करते हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में सब किसी की कोई ना कोई ओपिनियन रहती है। लाइक समटाइम्स इट्स बेस्ड ऑन रीजनिंग और कभी कभी ऐसे ही। तो आपने अपने करियर में काफी लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, तो व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग रिगार्डिंग डाइट और फूड विच यू हैव कम अक्रॉस? सो टू बी फ्रैंक, जब भी मैं किसी को ऐसे खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट और आई एम अ डाइटिशियन, सो द फर्स्ट थिंग इज सबको ऐसे लगता है कि ओ तो ये वजन कम करने का काम करते हैं, या फिर ये हमें सिर्फ सैलेड खिलाएंगे, ये हमारा खाना कम कर देंगे. सो दैट इज द परसेप्शन दैट पीपल हैव when you talk about diet or when you talk about nutrition. But I would say it is more than what is being understood by that word कि खाना कम या सिर्फ सैलेड खाना है या फिर सिर्फ हमें कम खाना है. इट इज मोर टू डू विथ योर डे टू डे लाइफ, बिकॉज मैं यूजुअली ऐसा मानती हूँ कि जब से आप बॉर्न होते हो तब से खाना is an utmost important thing about how things will take up or how things will come up in your life when it comes to wellness. So it's not something that is restricted just to weight reduction या फिर सैलेड खाने पे, but it's about managing your overall health. Because if you go to see, हमें पूरा दिन अगर हम अच्छे से नहीं खा रहे हैं तो हमारे सारे एक्टिविटी लेवल्स फ्रॉम आवर फिजिकल हेल्थ टू मेंटल हेल्थ इफेक्ट होते हैं. सो दैट इज हाउ आई विल डिस्क्राइब कि फूड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, and we are what we eat, so it is totally dependent on the quality and the type of food that we put in our body. Our body is obviously going to show up in the form of our skin, hair, behavior, mood, everything. when you say mood, एक्चुअली मुझे अपनी खुद की एक स्टोरी कहूंगा याद आ गई। सो आई थिंक इट्स लाइक 5-6 years बैक एंड आई वाज इन मुंबई दैट टाइम एक्चुअली। तो मैंने काफी वेट पुट अप कर लिया था किसी रीजन के वजह से। तो मुझे था कि अब मुझे ना वेट लूज करना है, जैसे आपने कहा, लाइक ऑल अबाउट दैट ओनली। तो मैंने बिल्कुल चावल और वो सब छोड़ दिया, जो भी कार्ब्स वार्ब्स थे। और आई स्टिल रिमेम्बर मेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी और 2-3 दिन बाद मुझे बहुत ज्यादा, जैसे हिंदी में कहते हैं, मैं बहुत चिड़चिड़ा फील करना स्टार्ट कर दिया। सो सडनली आई रियलाइज कि आई एम गेटिंग मोर एंग्री और आई कुडंट फिगर इट आउट कि मैं व्हाई आई एम डूइंग दिस। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने कुछ टाइम से जो है मैं बिल्कुल ही सैलेड पे आ गया हूँ, जैसे आप कह रहे थे। सो दैट इज वेरी ट्रू। हाउ डू यू सी, मतलब जैसे हमारा एक स्टेपल डाइट जिसे कहते हैं, लाइक सिंस आई बिलोंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक स्टेपल डाइट है जिसमें रोटी सब्जी और दाल है। Right. तो how important is the foods that come in one's staple diet? I would say a typical Indian thali, be it from north or south, it is more or less consist सारे components है उसमें. जैसे मैं usually वो 5 important components की बात करना चाहूंगी यहाँ पे, which is your carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. So ये एक strong मुट्ठी बनाते हैं, and इनमें से कोई भी एक missing है तो obviously आपकी feast strong नहीं होने वाली है. So जो भी हमारे इंडियन थाली है, so when we talk about carbohydrate, it is like हमारे रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, सीरियल, जो भी हम खा रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्ब्स. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन, हमारे थाली में यूजुअली दाल होता है और दही होता है या पनीर होता है, विच इज अगेन अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ डाइट. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन, फिश या एग,
वो भी एक सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है। जब हम फैट बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कोई भी खाना घी तेल के बिना नहीं बनता, या फिर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में कुछ रेसिपीज में हम पीनट पाउडर या तिल पाउडर डालते हैं, साउथ में कोकोनट डालते हैं, विच इज अगेन अ सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। एंड बात करें वाइटामिन एंड मिनरल्स की, तो वो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट से आते हैं। सो इट इज लाइक ऑल द फूड ग्रुप्स। तो एक बैलेंस जो हमारे इंडियन थाली एनी विच वे कन्वे कर रही है, बट कैसे रहता है कि हम सब एक चेंज के लिए ऐसे बोलते कि अरे वजन कम करना है, तो कुछ हटके होना चाहिए ना, तो लगे कि हम वजन कम कर रहे हैं मेंटली भी। बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट यू हैव टू प्ले विद द पोर्शंस एंड यू हैव टू प्ले विद द फूड ग्रुप्स, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से लाइफस्टाइल में हो। अगर आप 20 to 22 years तक जो आपकी मॉम या आपकी मदर ने आपको खिलाया है, विच इज टिपिकली एन इंडियन फूड, आपका वजन नहीं बढ़ा है, और उसके बाद सडनली अगर बढ़ रहा है, तो यू हैव टू ट्राई एंड सी कि दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए हैं जिसके कारण वजन बढ़ रहा है। सो इट कैन बी योर लाइफस्टाइल, इट कैन बी योर स्लीप पैटर्न, इट कैन बी कि आप सडनली एक एक्टिव लाइफस्टाइल से सेडेंट्री लाइफस्टाइल में चले गए हो, या फिर इट कैन बी समथिंग वेर इन आप खाना खुद के लिए बना के खा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन फॉर योर फूड, और यू डोंट हैव इनफ टाइम टू कुक फॉर योर सेल्फ अगर आप खुद कुकिंग कर रहे हो। सो वो सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं, ना कि आपका खाना या फिर आपका पैटर्न। सो इट इज नॉट कि हमारा पैटर्न हमेशा गलत होता है, बट उसके साथ जो हम एनवायरनमेंट में है वो भी मैटर करेगा। ट्रू इंडीड। अगर हम एक स्पेसिफिक जो कभी कभी फैट चलता है, हर किसी की लाइफ में आता है, दैट वन वांट्स टू लूज वेट, आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन, या तो आपने पुट अप कर लिया है, या यू वांट टू गेट बैक इनटू सम शर्ट जो आपको पहले फिट आती थी, वट एवर द रीजन मे बी। तो इसमें आपने सही कहा, हम जब ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जो थोड़ी सी हटके हो, तो हमें मेंटली एक किक मिलता है कि अच्छा हाँ, मे बी हम कुछ कर रहे हैं। बट यस। व्हाट आई हैव फाउंड कि ऐसी डाइट जो हटके हो थोड़ी ज्यादा ही, वो एक लॉन्ग टर्म में फॉलो करना इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, एक चीज है आपने वेट लूज कर लिया, और एक चीज है आप उस वेट लॉस को मेंटेन कर पाए। सो यही क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो या ईटिंग हैबिट्स चेंज कर रहे हो, कि या क्या मैं ये चीज पूरे 1 साल या 5 साल कंसिस्टेंटली कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। दैट इज द क्वेश्चन। गोइंग ऑन अ डाइट या कुछ अलग फॉलो करना इज नॉट इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट आई वुड से, बट उसको सस्टेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इट हैज टू बी सस्टेनेबल। हम यूजुअली एक बिफोर आफ्टर पिक्चर देखते हैं जहाँ पे कोई मोटा इंसान है जो पतला हो गया है, बट क्वेश्चन ये है कि वो पतला इंसान कितने सालों तक पतला रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। वो तभी तो पतला हो गया है, बट हाउ लॉन्ग कुड ही सस्टेन। बिकॉज कंसिस्टेंसी एक चीज है और डिसिप्लिन एक चीज है ना, कि जो हर कोई नहीं निभा सकता। मतलब इट इज वेरी इजी टू बाउंस बैक टू द ओल्डर अनहेल्दियर लाइफस्टाइल rather than being disciplined and consistent with the healthier choices. ट्रू। एक इससे अनरिलेटेड कोट है ना, इट्स मच इजियर टू गेट एट द टॉप बट डिफिकल्ट टू स्टे देयर। मे बी इट्स Yes. रिलेटिवली इजियर टू गेट स्लिम, बट slim, or I won't use the word slim, it's relatively easier to get healthy or some good shape, but difficult to maintain it, for sure, for sure. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एंड दिस इज आउट ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग जिसने मुझे काफी हेल्प किया है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने बहुत कुछ इस पे रिसर्च करके नहीं किया, दैट वाज लाइक समथिंग जो अगेन एक फैड वाला, बट इट गेव मी रिजल्ट्स। तो व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग लाइक, एंड हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क्स? राइट। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे डाइट नहीं बुलाऊंगी, वो एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है। एंड इट इज नॉट समथिंग दैट आई विल कॉल अ फैड इफ इट इज डन इन अ वेरी राइट वे, एंड विच इज समथिंग विद वे यू फील दैट नहीं दिस इज सस्टेनेबल फॉर मी और ये मैं कर लूंगा। दैट इज वन। सेकेंड, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जहाँ पे आप कुछ जगह 5 घंटा ही खाते हो एंड दूसरे आवर्स यू आर फास्टिंग। there is something like 16 hours of fasting and 8 hours of eating. So depending on your convenience आपको कौन सा सूट होता है, वो विंडो चूज करना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, फास्टिंग इज नथिंग न्यू टू आवर बॉडी। अगर हम रात को 8 बजे डिनर कर रहे हैं और नेक्स्ट डे 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, when and in between we are sleeping, so any which way our body is going into that fasting phase. And fasting phase is equally important along with the eating phase, because fasting phase में हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, हील होती है, रिपेयर होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो रेस्ट चाहिए वो मिलता है।
So it is not something new. Like हर religion में, be it in the Hindu religion or Muslim religion, हम सब fasting practice करते हैं, only the way of fasting is different. So it is not a new thing, it is just the old thing that is revamped and got, came into marketed. limelight again and marketed like a trend, which is not a trend. One, अगर आप intermittent fasting सही तरीके से करते हो और उसे maintain करते हो, तो the benefits are immense. And there is one simple type of intermittent fasting, usually, which I suggest many of my patients also, which is called as circadian rhythm fasting, which is like you eat according to the environmental clock. Sunrise से लेके sunset तक आप खाओ. Sunset के बाद you reduce your food. You reduce your food and gradually put your body into the rest mode. So that is the best kind of fasting because वो easy to follow होता है. Plus you are not restricting too much yourself when it comes to food, because ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि you are eating just for 5 hours and you are you're becoming deficient in important vitamins and minerals which are good important for your health, which will come from food. तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव भी नहीं करना है, एंड इट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड. बट खुद से करना आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज आपके सारे बहुत सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है. आपका स्लीप पैटर्न इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है. उसके साथ अगर आप डायबिटिक हो या हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर आपके शुगर्स हमेशा से डीरेंज रहते हैं, तो फॉर दैट पर्सन आप आपके डॉक्टर को और न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके वो चीज़ करो, रैदर देन डूइंग इट ऑन योर ओन. बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स भी यूज है अगर वो आपके बॉडी को सूट नहीं करेंगे. लाइक यू विल हैव एक्सट्रीमली लो एनर्जी लेवल्स, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, डेफिशिएंसीज बढ़ जाते हैं, स्किन हेयर इश्यूज बढ़ जाते हैं. तो डू इट इन अ वे दैट इज सूटेबल फॉर यू. और हर किसी के लिए 16 या 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग वीडियो विंडो सूटेबल नहीं है. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. द अदर थिंग इज व्हेन यू आर पुटिंग योर बॉडी इनटू अ फास्टिंग फेज, ग्रेजुअली आप जाओ. ऐसे नहीं कि सडनली मेरे नेबर ने या फ्रेंड ने 16 घंटे 18 घंटे फास्टिंग किया तो कल से मैं भी करूंगा. नहीं, आपकी बॉडी बहुत अलग है, आपकी बॉडी बहुत यूनिक एंड स्पेशल है. तो आप ग्रेजुअली शिफ्ट हो सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड सी वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. I have people who eat only for 6 hours in a day and they say that Shreya, my energy levels are extremely good. My mood is extremely nice and I feel energetic. So I want to be in that window. But for someone, some other person, it would be if he is eating 5 to 6 hours in a day, he'll be like, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा because I'm always tempted to eat. My sugar cravings have gone high. So it is very individualized, but it is not a bad thing. In fact, fasting से healing भी faster होता है. क्योंकि there are people who eat any time of the day. For them, to get them into discipline also, intermittent fasting helps. Because then they know कि मुझे यही टाइम में खाना है और यही टाइम में नहीं खाना है. But what you're eating in your, in the eating window would also play an important role. ऐसे नहीं कि मैं 18 घंटे फास्ट कर रहा हूँ तो जो दूसरे आवर्स है वहाँ पे मैं जंक फूड खाऊँ या प्रोसेस्ड फूड खाऊँ या पैकेट फूड खाऊँ, क्या फर्क पड़ता है. दैट शुड ऑल्सो नॉट बी द केस. वो ईटिंग विंडो में भी आपको अच्छा क्लीन और हेल्दी ही खाना है. It doesn't give you a license to eat unhealthy just because you're fasting for longer hours. ट्रू इंडीड। और आपने बहुत सही पॉइंट कैच किया। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे पूछने ही वाला था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, विच यू हैव ऑलरेडी मेंशन राइट नाउ। मैं इंडिविजुअली बात करूं तो आई फॉलो समवट ऑफ अ 15 और 9, मतलब मैं मुझे टाइम हो गया थोड़ा फॉलो करते करते। तो पहले वो 16-8 था, फिर मैंने नोटिस किया कि जब मैं ऑफिस जाता था उस टाइम पे मुझे अराउंड आई यूज्ड टू ईट बाय 9 आई गेस, एंड 11-12 के टाइम पे मेरा घंटी बजना स्टार्ट हो जाता था कि यार अब कुछ चाहिए। सो लाइक इट वाज लाइक 15 to 9। बट हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी कि जब से मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, मेरा पोर्शन साइज यूज्ड टू बी ह्यूज। इट यूज्ड टू बी ह्यूज, बट समहाउ आई डोंट नो इट इज इट साइकोलॉजिकल और समथिंग, मेरा पोर्शन साइज भी रिड्यूस हो गया। तो फॉर मी इट हैज प्लेड आउट वेल एक्चुअली। तो Yeah, that's what I गुड said. फॉर मी। When you see it as an individual and when you practice as an individual, you will understand that what goes well with your body. See, 16 hours didn't work for you because you understood that that 1 hour also makes a lot of difference for you. And that's why you reduced it to 15 hours. So that is by logic that you understood your body and you understood your body's demand and you, changed it according to that convenience. So it's very important, rather than just drastically going into a fasting phase and start eating in a eating window, which is all not doesn't make sense. बहुत gradually करना है अगर intermittent fasting कर रहे हो, and ये सबके लिए नहीं है.
इट इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज हर कोई उतना फास्टिंग नहीं कर पाता. इफ यू आर समवन हु हैज अ faster metabolism or a stronger metabolism, then you will feel hungry every now and then. If you are someone who is underweight, or if you're someone who is malnourished, then intermittent fasting is not for you, because your body would be, more deficient in the vitamins and minerals which it is already deficient in. आपने बहुत इंटरेस्टिंग टैंजेंट मेंशन किया, दैट इज मेटाबॉलिज्म. एंड आई माइट साउंड वेरी नाइव क्योंकि मेरी नॉलेज इस फील्ड में बहुत ही बिल्कुल नील के बराबर है. सो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है बोलते हुए, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू, कि जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, लाइक देयर आर टू पीपल, मी एंड माय फ्रेंड, और हम लोग नियरली सेम ही क्वांटिटी खाते हैं, बट अगर उसका मेटाबॉलिज्म बेटर है तो देन he or she might be able to digest नहीं, I mean he or she might be more slimmer than me or something like that. ऐसा होता है कुछ, या there are other factors that contribute to it? There are too many factors that contribute to it. So when we talk about metabolism, it is not just metabolism, but it is your gut health also. बिकॉज़ आप जो भी खा रहे हो वो एट द एंड एब्ज़ॉर्ब हो रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में. सो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक है तो आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होने वाला है, बिकॉज़ जो भी, सो इन सिंपल लैंग्वेज हम मेटाबॉलिज़्म को क्या बोलेंगे? अ रेट एट व्हिच जो भी आप खाना खा रहे हो वो प्रोसेस हो रहा है. कुछ लोगों में फास्ट प्रोसेस होता है, कुछ लोगों में स्लो प्रोसेस होता है. सो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स, लाइक आई वुड से एक तो है कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ कैसा है. अगर आपको कोई गट इश्यूज नहीं है, आपकी गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली यू वुड बी ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म. वन. सेकंड, दूसरा ये फैक्टर रहता है कि एट व्हाट स्पीड आर यू ईटिंग, हाउ आर योर स्ट्रेस लेवल्स, दैट विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म. थर्ड इज हाउ एक्टिव आर यू. सो एक्टिव का मतलब यहाँ पे मैं टैग करूंगी कि एज अ पर्सन ऑल्सो देर आर मेनी पीपल हु आर रेस्टलेस पर्सनैलिटी, and there are many people who are very calm and cool personality. So that behavioral pattern also plays a very important role when we talk about metabolism. So it would not be restricted just कि oh I am blessed with good metabolism, but उसके भी सारे बहुत सारे factors हो गए which are leading to it. So I would not say good metabolism is a good factor or a good plus advantageous factor. बट अगर उसके साथ आप रेस्टलेस पर्सनैलिटी हो, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ओकेश है या फिर नॉट दैट गुड है, so that good metabolism is of no benefit, because internally or clinically you will not be at a great position. So just इनफैक्ट, metabolism would not be a factor to judge a person कि okay this person is blessed with a good metabolism तो इसको कुछ भी खिला लो डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा और वेट गेन नहीं होगा, because it will show up in the blood reports then. या आई मीन देयर इज मच मोर देन व्हाट व्हाट इज देयर, जो आपको दिखता है उससे ज्यादा बहुत कुछ होता है. मतलब मेरा एक फ्रेंड है, so like since covid के टाइम से, I mean he is not at all active, and he used to be a lot, he used to play a lot फुटबॉल एंड एथलेटिक्स और ये सब हमारा बहुत होता था, तो he used to be in all of this. and right now, अब वो 3-4 साल से मुझे अच्छे से पता है, he is a very good friend, तो he is not into anything. मैं उससे कहता भी हूँ कि यार अगर मैं तेरे तेरे से 3-4 साल से ऐसे पड़ा होता तो मैं तो बिल्कुल फूल गया होता. तो दैट इज एक्चुअली समथिंग जो मैं उसे कहता हूँ. मैंने कहा यार बहुत अच्छा है तेरे लिए कि तुझे बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, अंदर से ऑब्वियसली क्या चल रहा होगा वो पता नहीं, बट एटलीस्ट वैसे उसमें कुछ खास पता नहीं चलता. एंड इनफैक्ट फिजिकल एक्टिविटी जब हम बात करते हैं, फास्टिंग की हम बात कर रहे थे अभी, सो लाइक फॉर 3.5 years I used to practice mixed martial arts, and along with that I used to fast. So I used to observe fast on Monday. तो उस टाइम पे I used to practice as well, and which is, this exercise is, it demands a lot of you. Like 1 hour you just crash in that, and along with that fasting. So how do you suggest ki, is it good to like work out when you're fasting or something, or how does it all comes together? So again, I will come to this point that this will be individualized. There are some people who do extremely well when they are fasting, when it comes to exercise. And there are some people who would be like low on energy, and for them eating would be very very important. Like अगर कोई diabetic patient है तो हम usually ऐसे बोलते हैं कि please eat something and don't exercise on an empty stomach, because the chances are कि आप the sugar levels can drop in, or you going into hypoglycemia would be at risk. So we don't want the risk involved, so please eat something and then go for your exercise. And when you say that you are comfortable doing your activity in the fasting phase, that is also good, because somewhere the chances are the fat stores will get utilized.
बिकॉज जो ग्लूकोज है वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, एंड आपका अगर प्रीवियस मील 12 आवर्स 13 आवर्स पहले था, तो वो 12 आवर्स फेज में आपका ग्लूकोज ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है. So now what would body do is for its energy it will go to the first sources are muscle mass, the second sources are protein, that I mean the muscle, and the third sources are fat. So it will start burning the fat mass. But this again is very individualized because there are people who would have discomfort when they eat and exercise. So for them, fasting is a good thing, and they feel that a maybe something like a lemon juice or a nimbu pani or electrol water is okay for them to have while they are exercising, and that keeps them up. So hydration works for some people. For some people, they need to eat something sugary or solid food so that their energy levels are not compromised and the stamina is maintained all throughout the exercise. So it is all about how well your stamina is. So when a person comes to me and tells me कि मैं pre workout ये खा रहा हूँ, supposedly I'm eating a fruit and I'm exercising, and after exercise I have my post workout meal. So the first question that I ask is how was your stamina after you had the fruit, or whether you felt कि if you had not had the fruit and exercised you were at a better position. So that stamina, that energy levels, lets me decide कि what works for that person. For some people that fruit is also not enough, they will say कि नहीं नहीं, फ्रूट से भी मुझे और वीक लग रहा था तो आप और कुछ ऐड करके दे दो. देन हम उसके साथ फिर या तो मिल्क ऐड करते हैं या नट्स ऐड करते हैं सो दैट द एनर्जी लेवल्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड और द स्टैमिना इज गुड ऑल थ्रू आउट द एक्सरसाइज. सी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते वक्त फास्टिंग फेज हो या नॉन फास्टिंग फेज हो, फर्स्ट 15-20 minutes आर ऑलवेज गुड. It's how you progress, in another 30 minutes. After that 30 minutes you realize what's your body's best Hmm. capacity. Yeah, after that, like at the end of the workout, I remember उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था. या फर्स्ट 30 मिनट्स यूज टू बी स्मूथ, बट उसके बाद इट यूज टू बी डिफिकल्ट. एक आपने ये बताया कि हाउ फास्टिंग के साथ इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और आपसे बात करके जो मुझे समझ में आ रहा है, इट्स लाइक एवरीथिंग रिगार्डिंग हेल्थ इज वेरी होलिस्टिक. इट्स नॉट इंडिविजुअल, लाइक नॉट वन शू फिट्स ऑल वाला अप्रोच तो है नहीं इसमें. एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी या कहूँ या एक फेज होता है लाइफ में व्हेन यू आर इन कॉलेज और यू आर इन योर अर्ली 20s और आप ना बॉडी बनाने के पीछे पड़े होते हो. उस टाइम पे आपकी डाइट और जो लॉजिक है वो कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है. सो if someone comes to you, and I'm very sure कि आप ऐसे लोगों से मिलते भी होगे जो they are in their early 20s, they are now gymming in, and सब वे प्रोटीन और सारी चीजें आ रही हैं. What should one look out for at this time, और किस तरीके की अप्रोच से one should start having Right. those diets or going into that phase? So as you rightly said, कि अभी जैसे currently the trend is that every college going kid wants to go to gym, wants to be healthy, wants to eat right, which was not the scenario before. But now there is a lot of awareness that I see. So if one person comes to me, another five friends of his will come and tell me, okay, I also want something similar diet. I also do gym and I also exercise. Now the question first is, obviously what I usually do is I usually test them for the clinical parameters so that we understand whether clinically the person is sound and there's no other risk factor involved. One. Second, vegetarian and non-vegetarian does make a lot of difference because then I can choose my protein sources in the person's diet. That would be another important thing, and accordingly we decide whether a whey protein is actually a requirement or not a requirement. Plus obviously the college lifestyle and maybe the classes and the stress of the entrance exams also sometimes, or if they're done with the entrance exam, then that's a different story altogether because their lifestyle also becomes sedentary because all the time they're studying. The college is again now hybrid or virtual, or if they go to college also it's just thrice a week, not more than that. So that's again a sedentary lifestyle. So if the person is non-vegetarian, I would say, then my eating plan becomes much easier because I can meet up on the protein sources very easily from eggs, chicken, fish. If the person eats meat, then meat. These all things would help me plan a good high protein diet, which is actually a requirement in a growing child. 18, 19 adolescent mein to I would say the boys grow till the age of 22. So I can, I have to take care of their calcium, I have to take care of the other vitamins and minerals also, which are very important in this growing age because the stores are built up in that age group.
That is another thing. If the person is vegetarian and वो vegetarian में भी the dairy products, if I'm not able to meet up the requirement, my other source would be whey protein. So I would not say whey protein is totally bad. It is totally how you go about choosing the whey protein. आप कौन सा whey protein choose कर रहे हो, कितना quantity ले रहे हो, कौन सा brand है जो you have to look कि उसमें कोई additives नहीं है, कोई sweeteners नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो बॉडी को हार्मफुल है. बिकॉज आजकल अगर आप वे प्रोटीन का मार्केट देखोगे तो उसका ग्रे मार्केट भी बहुत बड़ा है. मतलब there are very different brands that are coming up, and you don't know what they have. So the first step is you have to start reading the labels now. So that is one important thing कि you start reading the label. And I just say that अगर कोई भी वे प्रोटीन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके अंदर सिर्फ वो दो तीन चीजें होनी चाहिए which are important. उसके beyond there should not be any additional chemical names also. Like now you see that there would be artificial sweetener, then there would be emulsifier and all those things. We don't need that. Our body doesn't need that. And if you're going to consume something like that on a daily basis, rather than consuming the healthy part, you are consuming the more of the unhealthy thing which is not required by your body. So whey protein, depending on your body's requirement, not a bad thing if you're a vegetarian. If you're a non-vegetarian, I think it is much easier to meet up the requirement with the non-veg sources. Then obviously it totally depends on the activity levels and the kind of physical activity that you're into. So if someone is an athlete or someone is into some kind of sports, and that person is very active, maybe 4 5 hours in a day, then obviously I would require the whey protein and the sources there, because the person is very active. But someone who is just doing 1 hour of gym in a day, I would say we have to see the other parameters and the whole day's lifestyle to include whey protein in the diet. बिकॉज़ अगर आप वो 1 घंटा जिम कर रहे हो और सिर्फ पोस्ट वर्कआउट के लिए अगर आपको मीटअप करना है तो यू कैन डू दैट. इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आप एग से खा सकते हो, चिकन से ले सकते हो, फिश से ले सकते हो. और अगर पूरा दिन सेडेंटरी है तो फिर व्हे प्रोटीन डजंट कम इनटू द पिक्चर. Then that is not a requirement. Currently, the scenario is that every person who goes to gym feels that मुझे तो whey protein लेना ही है. मुझे वो बड़ा डब्बा लेना है, दिन के 4 स्कूप खाने हैं, because that's important for muscle building. So Yeah. muscle building के लिए you have to understand that you have to be very active also along with it. Just consuming whey protein will not help in muscle building if you're not active or if you're not exercising. That is also important. 1 hour in a day, and you say, I just will have scoops and scoops of whey protein. No, boss, that's not the truth. ये मुझे किसी ने बहुत कैजुअली मेंशन किया था कि एक टाइम है जब आप जिम जिम कर रहे हो और आप ये प्रोटीन कंज्यूम करो, दैट इज वन थिंग. पर जब Hmm. आप एक ऑब्वियसली टाइम आता है, हर किसी का फेज आता है दैट मे बी यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज, आप यू आर मूविंग बिटवीन सिटीज और सम ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज दैट वे, और उसके बाद जो उसका इफेक्ट होता है वे प्रोटीन का, दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, लेट्स से दैट. क्योंकि आप अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, देयर आर इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. एक दो चीजें आपने बहुत अच्छी मेंशन करी. पहले एक, आई एम अ वेजिटेरियन, तो हम लोगों का वैसे भी खाना ऑर्डर करने में भी दो तीन ऑप्शंस होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन, तो वो तो बहुत ही लिमिटेड है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. एंड कॉलेज जाने वाले फेज की हम स्पेशली जब बात करते हैं, दिस इज अ वेरी रेडिकल चेंज जो मैंने देखा है. क्योंकि जो हमारे टाइम के कॉलेजिंग फेज था, उस टाइम पे everybody used to survive out of Maggie or some local dhaba or something. Green juices, which is a very good thing, but इतना कुछ नहीं था. Now which see the craze, it's very different Right? what it In used fact, to be before. colleges and the campuses also have inbuilt gym. You won't believe they have gym, they Oh, have trainers and everything now. So that the awareness level is next level. In fact, I have kids who would come and question me, and wherein I'm like, okay, you know all this at such a young age. Wow, I never knew all this. So they're like true. they are aware about it, they know, they read up, and then they will come and question you, okay, I have to take this and I have to take this, and this is good for me and this is not good for me. But my parents don't allow me, so that's why I've come to you with my parent. So please ask them or convince them. And that's good. And basically I think it's like the Mumbai factor as well, that the बच्चे भी अवेयर हैं एंड पेरेंट्स भी तैयार हैं साथ में जाने के लिए कि बच्चे की डाइट क्या, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज समटाइम्स आई हियर सम वेरी chaotic स्टोरीज जो सिंपल डाइट चेंज की वजह से होती हैं. True. And see, at a young age, when you talk about a college going kid,
you always under something like a peer pressure also, like my xyz friend is doing something and I want that similar thing, but they don't realize that their body is very different, so they have to understand that uniqueness about their own body, and that doesn't come at that age, I would say. That's very natural. अगर उस टाइम पे इतनी wisdom आ जाएगी तो बाद में क्या करेंगे? Yes, yes. And just tangentially, I mean, I feel that kids and people who are in like in that phase are much more wiser than at least me or what I used to be at that time. I mean, their knowledge levels, what they are doing in every sphere of life, it's very different. I तो totally agree to that part. बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज है. मैं सोचता हूँ कि how did we or people like me used to manage, तो that is a different thing. एक और मतलब आई वोंट से कैटेगरी, बट हाँ एक डिस्टिंक्शन रख सकते हैं. जैसे मेरे मैं जब अपनी फ्रेंड से बात करता हूँ, स्पेशली फीमेल फ्रेंड से जब बात करता हूँ, तो एक एक चीज होती है कि देयर इज समथिंग आई हैव नोटिस कि अब ऑल्दो देयर इज वेरी मच अवेयरनेस अबाउट कि हाउ इवन women are taking care of their health, taking care of their diet, and even going to the gym, because from what I understand, doing some sort of weightlifting or muscle exercise is necessary, especially to maintain or conserve your muscles. तो जो स्पेशली जो ये फीमेल हेल्थ अवेयरनेस है, जो डाइट से रिलेटेड चीजें हैं, how do you view it and what are the common problems that you listen to when clients come to you? So I would say when it comes to the other gender, or when you talk about girls or females, post pandemic, I am seeing a lot of cases wherein it is either PCOS. Now, when we say PCOS, it's more to do with the irregular monthly cycles that the females experience, or something like thyroid is also something that I'm seeing a lot. Obesity is something I'm seeing a lot. Pre-diabetes is something that I see in young girls, young kids a lot post pandemic, and that's obviously the lifestyle has drastically changed for them also, so no one is to be blamed there. The activity levels have zeroed down. But female in case of females, what happens is, the females go through a lot of hormonal changes also. Compared to males, they go through a lot of hormonal changes, and that's a monthly process. So again, and when I say I see a lot of pre-diabetes, the reason is insulin भी एक तरह का hormone है. So अगर वो derangement, hormonal derangement है या hormonal imbalance है, so I'm going to see more in the females because they go through a lot of ups and downs every month. So, and as you rightly said, that activity or physical activity is equally important for girls or females. So that will play a very, very important role. So, I have seen many young girls, that after the age of 10, 12, they stop playing the outdoor games. It's more about sitting and chit chatting with their girlfriends, or it's just, sitting with their phone. So that is the change that I usually see. Now, when we were discussing about gym thing also, I've always had young guys coming to me, or young, boys coming to me, but I have never had girls coming to me. I mean, hardly. I would say it is going to be like, if there are 10 boys, it will be one girl that I would have seen when it comes to gym, or when it comes to exercise routine, or when it comes to eating right. So I don't know, as a family or as humans, where we are going wrong when we talk about gender. That would be one thing. But yes, the focus has to be there, and there has to be a priority when we talk about the girl health also, or a female health also. So it is not, nowadays obviously they are not restricted to just kitchen or cooking. They are doing too many great things. So the focus reduces because एक तो रहता है कि I don't know, there's this lack of motivation when I see girls, young girls, that they are not motivated enough to do certain things. They are okay, ho jayega, kar lenge, kind of. Second, obviously, since I think the studies and I would say competitive exams have increased, and with girls, I don't know, they are not. Sometimes I feel they are very good at multitasking, and sometimes I feel they are not at all. Or maybe as kids, or as girl of the family, I feel some girls are very much pampered also, wherein it's okay, ठीक है, the laid back attitude that I see from the parents also. But yes, hormonal changes, and specifically, I see a lot of PCOS and thyroid cases wherein I feel just the right nutrition, just the right amount of activity, and it can be reversed.
It is not something that cannot be controlled or that cannot be reversed. But for some people, it is more easier to pop a pill than rather than follow a lifestyle or follow an eating plan. But if the young child or the young girl is diagnosed early with something like PCOS, I would say take the help of the doctor, take the help of the nutritionist, start with the dietary changes and lifestyle changes, and you can reverse the parameters. Because PCOS again is more to do with insulin resistance. Now, when we talk about insulin resistance, that's the base for you being a pre-diabetic down the line, maybe 5, 8 years down the line, and diabetic 10 years or 12 years down the line. So if you are controlling or if you are taking care of the insulin resistance at a very early age, you being a pre-diabetic or diabetic would never come into the picture. Yeah, and this is very surprising actually जो आपने कहा, क्योंकि like when you talk about like women who are in their late 20s and you get to understand कि ठीक है, there's a phase that they are getting married, they are having kids, all this time it's reasonable to understand that either the time management is not there, with the additional responsibility they are working and all that stuff is there. But Right. ये बहुत सरप्राइजिंग है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और मैं डिस्कस करते रहता हूँ ऑब्वियसली, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड शी ड्राइव्स लाइक फॉर लाइक एन आवर एंड अ हाफ एक साइड को, Okay. and goes to office and all that, तो I can understand उसके लिए मुश्किल है, still she finds time for thing, but मुझे ऐसा लगता था that would be compensated by diet, कि either they are taking care of their diet like for good. बट ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि आपके मेजर जो आपसे इनफैक्ट जो मिल रहे हैं, दे आर गाइस, दिस इज वेरी So even सरप्राइजिंग या when you talk about adolescent, more boys. When you talk about 35, 40, I would say more housewives or more females there. Because फिर ना वो alarm बजता है. Oh, my sugar levels are up. My thyroids have Yeah. spiked up and all those things. And then they'll be like, okay, I have to do this, I have to do this. So obviously post 35, 38, I see a lot of females. But prior to that, I would see more of the other gender. मैंने तो बहुत कैजुअली जो देखा है अपने आसपास, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो या तो जब शादी सीजन आता है, एंड देन दे गॉट गेट टू नो कि यस, So नाउ I इट्स think टाइम with टू, genders, it's like that कि अभी शादी है तो I have to reduce, I have to look good, I have to fit in a या particular. या फिर if there is a family wedding also, they will have this set goals. I have 4 weeks, आप कुछ भी करो, I will, whatever you tell me, even if you tell me to starve, I will starve and reduce, but मुझे पतला कर दो. हाँ, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है, मतलब पूरे साल भर हम लोग जाएंगे, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, और एक दो महीने बिल्कुल जो है उनकी टिफिन बॉक्स चेंज हो जाते थे, बिल्कुल ग्रीन और ऑल दैट, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक अ लॉट अभी. I would like to make a point that I have seen so many people who go for meal replacers, who go for fat burners, which actually is a marketing gimmick, which is like you take this pill and you will reduce weight. ये पिल खाने के पहले ले लो, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका वजन भी कम हो जाएगा. And out of desperation or whatever you call it, people go ahead and buy such products. Like meal replacers bhi hai ki you skip your lunch and you just have this powder and water or milk, and that should be enough for your protein and caloric requirement. You don't have to eat your khana, which is again not right. बिकॉज़ वो 1 मंथ, 2 मंथ्स में आपको रिज़ल्ट दे देगा, आपको पतला कर देगा, बट आफ्टर दैट द क्लिनिकल पैरामीटर्स, द डेफिशिएंसीज़ दैट यू सी आर really astonishing, and you feel what have you done to your body. You actually feel like telling them that you yourself have brought the illness to your body via those supplements and meal replacers. एटलीस्ट मैंने ये मेरे एनवायरनमेंट में नहीं देखा, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मील रिप्लेसेस मुझे पता था एंड ऑल दीस पिल्स, बट मुझे लगता था कि ये ज्यादा बाहरी है, यहाँ उतना पेनिट्रेशन नहीं है इसका, बट एज यू आर टेलिंग दैट मींस दैट इट इज देयर. No, it is very common and it is easy. So everyone wants that easy way out. इजी वे आउट या. कि अगर मैं पाउडर खा के वेट लॉस कर सकती हूँ, तो मैं क्यों एक लाइफ़स्टाइल चेंज करूँ या मैं क्यों एक एक्सरसाइज़ रेजिम फ़ॉलो करूँ? मुझे ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ ऑब्वियसली मार्केटेड आल्सो दैट वे, कि आप ये खाओ, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Uh, true. And you have actually told me a lot, और मेरे काफी misconceptions भी clear करे हैं. Like moving on to our last part, what I really like to ask is जो एक certified education है regarding nutrition, like what you have, what is its ecosystem right now in India, कैसा है, और क्या जरूरत है और कितनी जरूरत है इसकी अभी, like, and what can people find in, like, if they choose to go into a career like you, or even for if their personal gain, if they choose कि नहीं मुझे I need to get a professional education regarding this. राइट।
So first is when I started 10 years back, there was not even awareness that what a dietitian or a nutritionist does. It was just restricted to weight reduction. So that was the first thing. Now obviously when in India, I would say there's a lot of awareness among the common people also, and among the doctors also, that it is when it comes to food and when it comes to the management of food, ये एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है. हम डॉक्टर्स इसमें एडवाइस नहीं करेंगे, हम उनको रेफर करेंगे, which is something now I see a lot. Third is obviously when you say a profession as a nutritionist, we do a 3 months 3 years of basic graduation in food science, and then we do a master's in food science. Then we have a compulsory internship that we have to do it in the hospitals for our experience to deal with the practical cases, and then we move out in the market. Either we work for some hospitals or we have our own practice. But that is after that 6 to 7 years of rigorous training and education, after which we are allowed to practice. Now in India, we don't have any fixed laws here, which which tells you कि ये right nutritionist है या ये right dietitian है, and XYZ is wrong or a quack. Because अगर आप nutrition के field में देखोगे तो you will see a lot of you know people who have like, I have lost 20 kgs and now I'm helping people losing 20 kgs. That is what you will see on social media a lot. Yeah, We call them yeah. influencers or we call them, I don't know, but people fall into such trap and then they spoil their health. So I always say, matlab, I feel very happy when someone asks me, what is your qualification? What have you done in the past? What is your experience? You have full right to ask those questions before you hire a nutritionist. अगर आप डॉक्टर का क्वालिफिकेशन गूगल करके चेक करते हो तो न्यूट्रिशनिस्ट का भी चेक करो. दैट इज द फर्स्ट थिंग that I would like to convey to common people. Do that, do your thorough research and then go for it, because if you're going to someone who has lost 20 kgs, that method has worked for that individual. It will not work for other 10 or 100 individuals. Then it is obviously a trap. That's one. Second is for the formal education, obviously we have something like graduation in food science, which is like a 3 years course, and then you do your masters. You have many universities and colleges that offer these courses. Do it from a university or I would say a college which is renowned and which is accredited, rather than doing it from any random places, because now there are many people who run the courses also when it comes to nutrition. 2 months crash course and 3 months crash course. वो अगर करना है तो खुद के लिए आप बेसिकली कर सकते हो. But don't start practicing after that, or don't start advising people after that, because you don't have that in-depth knowledge. And if you are dealing with a clinical case like diabetes or cholesterol, what you're doing is indirectly you're harming the opposite person also, right? So India, Yeah. I would say the laws are still not strict when it comes to quackery in this field. So that is the only way out is you check for yourself, you ask for what they have done, do a background check, and then go ahead and take the consultation. Not a problem. बट जस्ट बिकॉज़ आपने इंस्टाग्राम पे देखा किसी ने 20-25 किलो कम कर दिया और वो एडवाइस दे रहा है, देन दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. योर बॉडी इज़ वेरी यूनिक एंड स्पेशल एंड इट इज़ नॉट मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रायल एरर. So don't do that. That's true, and this is my takeaway from today's podcast. Ki, just get a reasonable and professional advice regarding this. Your body is not made for trial and error. I have done this mistake, or I have suffered the consequences as well. जैसे मैंने आपको बताया तो Right. I'm थैंक्स अ लॉट श्रेया, आपने इतनी सारी चीजें बताई एंड द लास्ट पार्ट वाज माय फेवरेट पार्ट, जहाँ पे आपने द होल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में, स्पेशली व्हाट गोज अराउंड ऑन द मीडिया एंड व्हाट वी ऑल आर रियलाइजिंग डे बाय डे, कि जो दिख रहा है Yes. सब कुछ वो जरूरी नहीं वो बेनिफिशियल हो. एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो अब दिख रहा है. सो थैंक्स अ लॉट. आपने, आई नो यू आर बिजी टुडे एज वेल, बट स्टिल यू Thank chose you to so talk to me. Thanks for coming on the podcast. Thank you so much.